So, very good morning, everyone, and warm welcome in this program, which is online dialogue on groundwater governance in India, role of government and industry, challenges, and way forward. So, before we move ahead with this program, I would like to quickly tell you the background that the idea of this program, we curated this program along with Crystal Technologies, and the idea was that everyone recognizes the value of groundwater and can contribute making it in a using it in a sustainable way. We did a series of training programs on groundwater management. We started with Rajasthan, went on to Chhattisgarh, Maharashtra, and Haryana, and now it's about Uttarakhand. So, why do we need to conserve water and what are the key challenges? So, just to give a quick background of the water sector overall, I would like to say that, we all been listening and seeing and witnessing urbanization, industrialization, and which is posing a lot of pressure on most of the resources, and water is no exception. We feel that we have unlimited water resources, while that's not the scenario. Our demand for water is increasing. However, the amount of water, the quantity of water which we have is the same. Most of our river basins are either closed or are in the process of getting closed. If I talk about the availability of water, we're seeing a declining trend as far as availability of water is concerned. Talking about the demand of water across the sector, be it domestic, industrial, or agriculture, there is a increasing demand of water in across the sectors. So our focus somewhere moves from surface water to groundwater, but there also the scenario is not very promising. If I quote one of the studies of Central Groundwater Board, which was done in 2017, so almost 7,000 blocks were assessed, out of which almost 17.2% blocks were found overexploited. Also, the kind of programs we run, either the best of the best command area programs, which are for the agriculture sector, there also water use efficiency is 30 to 50%, which is not again very high. Talking about NRW, which is the domestic sector, non-revenue water, there also the efficiency, there are leakages and losses, which are 30 to 50%. So the onus lies on us. Whatever best possible way we can contribute, we should contribute. Talking specifically about industrial sector, there also our water demand is much higher than the kind of water, the demand of water in other countries. Specifically, if I talk about Uttarakhand, so industries in Uttarakhand state rely heavily on groundwater for their operations, with major sectors such as textiles, food processing, and pharma. They are the biggest users of groundwater. Also, they generate. When we talk about water security, it's not just the quantity of water, it is also quality of water, and the kind of wastewater being released in the resources also ultimately reduces the overall quality of the water. So if I talk about the industries in Uttarakhand state, there is significant amount of wastewater which is generated and eventually discharged in the environment without proper treatment, which again leads to groundwater contamination. So seeing the challenges which are around water resources, be it surface or groundwater, specifically talking about groundwater, there have been certain notifications. There was a notification which came almost 2.5 years ago, wherein it was expected that the industries will take some initiative in terms of their own way, in terms of how much water they are extracting, to gauge the quantity of water they are using, groundwater they are using, and then how can they reduce their overall usage of groundwater. And also, if they need to apply for NOC, what are the key challenges which you are facing in case you do. So, to solve and to answer all these queries, we have curated this very important and very special panel, which has the experts from various sectors. We have with us Shri Prashant Kumar Rai, who is Regional Director, Central Groundwater Board, Uttarakhand. We have with us Shri Dr. Harindra Kumar Garg, who is the Chairman, Sidcul Manufacturers Association, Uttarakhand. We also have with us Shri S.C. Pant, who is the Chief Engineer, Pay Jal Nigam, Uttarakhand. And we have with us Mr. Shri Vinay Chatraju, who is co-founder, Crystal Technologies. And
I'm sure we have good industrial participation. So the idea is we would start the program with some key highlights from various panelists, and we will also open it for the question answer session. So if you have anything pertaining to the overall process of NOC, taking NOC, or any other challenge which you are facing as far as your industrial operations are concerned, please put it forward towards the panelists, and I'm sure you'll be able to find the replies of your queries. So, without further ado, I now request Shri Prashant Kumar Rai ji, who is Regional Director, Central Groundwater Board, Uttarakhand, sir, to kindly propose a welcome address, a keynote address from your side, so that we can start the program. And please set the tone for today's dialogue. Over to you, Rai sir. नमस्कार जो सभी पार्टिसिपेंट को। एक्चुअली मुझे तो मालूम नहीं था कि की नोट एड्रेस मुझे ही देना है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इसमें कोई इसके लिए मतलब वेल अवेयर हैं सभी हम लोग जितने पार्टिसिपेंट हैं। हमारा उत्तराखंड में जो ग्राउंड वाटर की कंडीशन है, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड from time to time estimate the resource groundwater resource estimation in 18 blocks of Uttarakhand state, और वो ब्लॉक्स जो कि जहाँ की स्लोप हमारा जो है लेस देन 20% है। तो इन लेटेस्ट ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन हैज बीन कैरिड आउट ड्यूरिंग 2022, and in this estimation our 4 blocks namely Bahadrabad and Bhagwanpur in Haridwar district, Kasipur and Kasipur in Udham Singh Nagar, and Haldwani in Nainital districts are declared as semi critical. तो मुझे जो इंडस्ट्री के लोगों से करना है, जो क्योंकि ये बेसिकली जो है इंडस्ट्री और ग्राउंड वाटर रेगुलेशन क्या है उसके लिए ये वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उनके लिए कहना है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज रेगुलेटिंग द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड अदर रिलेटेड थिंग्स इन उत्तराखंड स्टेट, तो वो अभी तक जो इंडस्ट्रीज ने हमसे एनओसी नहीं ली है या अपने रेगुलेशन को रेगुलराइज नहीं कराया है, तो वो करा ले। इसके लिए हम, जैसा कि गर्ग साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ मिल करके हम लोगों ने हरिद्वार में एक उसको मास अवेयरनेस कर लें या पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम कर लें, वो ऑर्गेनाइज किया था, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया था कि कई इंडस्ट्रीज ने अपने को रेगुलराइज करा लिया। दूसरी चीज ये है कि एक आप यदि रेगुलराइज करा लिए, उसके बाद जो उसमें कंप्लायंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसमें कंप्लायंस, क्योंकि जनरली आदमी होता क्या है कि मतलब रेगुलराइज करा लिया, देन वो सोचता है कि अब कोई हमें जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर एनजीटी का या कहीं और डायरेक्शन में इंस्पेक्शन होते हैं, और उसमें कई जो है नॉन कंप्लायंस पाई जाती हैं, और कोर्ट का डायरेक्शन प्लस गवर्नमेंट, इसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हो, सभी इतने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है वेरी फ्रेंकली। तो हमें उस कंप्लायंस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और कंप्लायंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देंगे। पहले जैसे हम लोग एक कहते थे कि आप अपने इंडस्ट्रीज में ग्राउंड वाटर लेवल मॉनिटर करिए, अब वो डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर आ गया, जो आपकी एक आदमी वहां लगता था उसकी भी अब जरूरत नहीं रह गई, आप DWLR लगा दिया, आपका काम होने लगा। ऐसे ही जो है फिर आप जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन डाटा पर जो है कोई मैकेनिज्म मतलब टेलीमेट्री लगा देते हैं, आपका डाटा आने लगता है। तो हमें जो है ये जितनी इस तरह की कंप्लायंस है उस पर जो है सचेत रहना है, और हम सबसे कहेंगे कि आप लोग रूल्स रेगुलेशन भी बहुत दीजिए। कभी भी किसी भी इंडस्ट्रीज को यदि ये लगता है कि ये हमें चीज नहीं समझ में आती है, तो हमें हमसे हमारे ऑफिस से जो है कभी भी जो है निसंकोच जो है कांटेक्ट कर सकते हैं उसके, और हमेशा हम लोग अवेलेबल हैं गाइडेंस देने के लिए। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पर्सनली आना चाहते हैं पर्सनली आ जाएं, फोन पर बात करना चाहते हैं फोन पर कर लें या मेल से कर लें, जो सबको अवेलेबल है। वेबसाइट पर हमारी जो वेबसाइट है कि www.cgwa-noc.gov.in पर, तो आप सबको जो है उस पर जाना चाहिए। और हमें ये लगता है कि ग्राउंड वाटर हमारा उत्तराखंड स्टेट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी दिखता रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्पेशली आप रामनगर और हल्द्वानी का देख लें, जो भाबर एरिया है, इवन बहादराबाद में
हमें ग्राउंड वाटर एक तो उसको एक्सप्लॉयट करने में, उसके ट्यूबवेल लगाने में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज है, क्योंकि नेचुरली जो है एक्वीफर वहाँ बड़े डीप डेप्थ पर अवेलेबल है। और उसके बाद जो दिन पर दिन जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर जो यूज के लिए, तो उससे भी उसके ऊपर स्ट्रेस है। तो हम सबसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है एक तो ग्राउंड वाटर में एनजीटी की भी गाइडलाइन है कि 20% जो इंडस्ट्रियल यूज है, प्रेजेंट इंडस्ट्रियल यूज, उसको रिड्यूस करना है बाय यूजिंग द डिफरेंट मॉडर्न टेक्निकल टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को इस पर भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं आप सबको यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि एक वाटर डाइजेस्ट ने भी हम लोग को ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया। थैंक यू। सर सर, थोड़ा सा आपसे ये जरूर जानना चाहते थे दैट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एनओसीज एक्सपेक्टेड, और अभी तक क्या स्टेट में ओवरऑल सिनेरियो है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ एनओसीज व्हिच आर गिवन ऑलरेडी, ओके ओके। और किस ऐसा है कि जो प्रोसेस को थोड़ा एक्सपीडाइट किया जा सके, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहते थे सर राइट राइट, आपसे। नहीं नहीं, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। अभी तक हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते, बट अबाउट 2000 एनओसी वी आर इशूइंग टिल डेट। और इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं ऑलमोस्ट सबने ले लिया है। और एक हम और बता दें इंडस्ट्रीज के, जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री हैं एंड दे आर यूजिंग लेस देन 10 KLD ऑफ वाटर, उनको जो है बस रजिस्टर्ड कराना है अपने को वेबसाइट पर, और ऑटोमेटिकली उद्यम का जो है वो नंबर डालते हैं, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एनओसी। तो उनको कुछ नहीं करना है, केवल रजिस्टर्ड करना है। तो उसमें जो है हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। Okay, sir. And so this also include infrastructures and hotels and other things, other such यस sectors यस, as well? इनको भी लेना है, बट इसमें जो है हम होटल एसोसिएशन जो उत्तराखंड का है उसके साथ भी मीटिंग किया था, क्योंकि 30 सितंबर 2022 तक ये था कि जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है विदाउट गिविंग द इन्वायरमेंटल कंपनसेशन एंड दे विल टेक द एनओसी। तो उसके लिए हम कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। तो उसमें जो अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद जो है ये बहुत ज्यादा होटल्स, जो करीब करीब जो रजिस्टर्ड होटल तो हम नहीं कहेंगे, जो बड़े होटल हैं उनने ऑलमोस्ट जो है जी, एनओसी ले रखा है। yeah. जी। Okay. So, like sir has mentioned, thank you sir for your address. And like sir has mentioned, if you have any query or you are facing any problem, you can reach out to him, you can speak to him, you can also write an email. So, moving ahead, now I'll move to our first panelist, who is Mr. Pant, Shri S.C. Pant, who is Chief Engineer, Jal Nigam Uttarakhand. Sir, we would like to know from you that how do you see the risk for groundwater, risk on groundwater through industrial and mining activities in a particular region like there in Uttarakhand, taking into account the kind of discharge pressure and the pollution load which comes from the industries? Is there some specific scientific model or thought process which you have aligned as far as groundwater management is concerned? Sir, we can't hear you. Requesting you to kindly unmute yourself. Sir, requesting you to kindly unmute yourself. Yes, sir. Namaskar, sir. So, by the time we get this, I think we're not able to hear. There is some audio issue, but by the time we'll fix it, I'll go to our next panelist, Dr. Harinder Kumar Garg, who is Chairman Sidkul Manufacturer Association Uttarakhand. And welcome, Dr. Garg.
And it's a pleasure for us to have you with us, and we'll be happy knowing that, what is the kind of scenario you see in Sidgul as far as the industries group, industrial association is concerned, what kind of best practices being adopted for water use efficiency, and what is your take on the kind of NOC which has come up, the kind of notification which has come up, and how are you seeing the support from the industries for the same? Thank you. I'm audible? Yes, you are. Please. Yeah. Thank you, Anupama ji, and my panelist, Mr. Prashant, one of my friend, Dr. Pant Saab, and Mr. Vinay, the entire fraternity of the industry and the stakeholders. There are a lot of challenge with the, I can say, with the industry all across the country. जब हम शुरुआत करते हैं ये exactly, or in the context of Uttarakhand, there is a lot of challenge, more challenge and more pressure because of कि हम लोग एक हिली स्टेट है, नंबर एक. नंबर दूसरा, कंट्री का हमारी स्टेट में 72% फॉरेस्ट लैंड है. हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, हमें चाहे अनचाहे भी हमें एक मान लिया जाता है कि हम एनवायरनमेंट के सबसे बड़े पहरेदार हैं. मैं शायद यहाँ से शुरू करूँगा, जो मेरी बात से प्रशांत जी भी सहमत होंगे, कि हमें मान लिया जाता है कि हम इस एनवायरनमेंट के हमें रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है. लेकिन ऑन द अदर एंड, अब हम दूसरी बात पे जाते हैं, तो हमें अपना ब्रेड एंड बटर भी चलाना है, इंडस्ट्री चलानी है. इंडस्ट्री चलाने के लिए हमारी फिर जरूरत होती है कि हम अपने सिस्टम को रन करें या कॉस्ट पैरिटी जो है उस पे काम करें. क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट उत्तराखंड में बना है, मैन्युफैक्चर्ड उत्तराखंड, प्रोड्यूस इन उत्तराखंड, एज यू सेड कि फार्मा है. आपको एक डाटा देता हूं, कंट्री का 22% फार्मा उत्तराखंड बनाता है, पूरी कंट्री का, और लगभग 11 से 12% कॉस्मेटिक्स हम उत्तराखंड में बनाते हैं. आउट ऑफ दिस 22%, 20% वो गढ़वाल जोन बनाता है, और उसमें से 18% अकेला सिडकुल हरिद्वार बनाता है. अब जब ये डाटा इतना बड़ा हो और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू एक्सचेंजर हमारे सामने हो, सेम लाइन विद द कॉस्मेटिक्स में भी हरिद्वार 12% कॉस्मेटिक्स में 10%, 10.5% कॉस्मेटिक खाली हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बनाता है. 1-1.5% में थोड़ा सेलक हुई है और थोड़ा एक आध जोन आप और गिन लें. मुद्दा यह है कि अब ये जो अब हमें जो जहां से मैंने बात किया कि हमें एनवायरनमेंट का एक चाहे अनचाहे पहरेदार गिन लिया, हमें बता दिया कि आप स्टॉल वार्ड हैं और आपको ये भी रक्षा करनी है. ओके, करते हैं. हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो जी, हाँ, हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, You are audible, Hello. Dr. Garg. You are audible. हेलो, We can hear you. हेलो. Yes, audible. You are audible. मेरी आवाज आ रही मैम? हाँ जी सर, आपकी आ रही है. जी जी, नमस्कार. सॉरी फॉर डिले. No, that's perfectly fine. डॉक्टर गर्ग, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, डॉक्टर गर्ग, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो. आई थिंक उनको मैडम फोन कर दीजिए, हमें लग रहा है स्पीकर उनका डिस्टर्ब. जी जी जी. So by the time we again connect with Dr. Garg, I now request Mr. Pant, maybe we can start from you. थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी. नमस्कार सभी को. हम लोग पेयजल डिपार्टमेंट से हैं, और पेयजल डिपार्टमेंट जो कि एक
मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी है रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो हम लोग ड्रिंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। तो जहाँ तक आपका इंडस्ट्रियल जो यूज़ है ग्राउंड वाटर का और जो पॉल्यूशन है उसके कंसर्न में मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड बनने से पहले हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, और एक लाल कुआं की जो पेपर मिल है उसका काफ़ी पॉल्यूशन था, और उनका पानी का एक्सट्रैक्शन भी उनका काफ़ी होगा क्योंकि पेपर मिल है। अब उसके बाद जब सिडकुल बन गया, रुद्रपुर में, पंतनगर में, हरिद्वार में, भगवानपुर में इंडस्ट्री डेवलप हुई, कुछ सेलाकुई में हुई हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारा एक्सट्रैक्शन जो है बढ़ा है। जैसे कि हमारे ग्राउंड वाटर के राय साहब ने बताया, तो उसकी ज़्यादा डिटेल तो उन्हें ही पता है कि कहाँ कहाँ हमारी क्या पोजीशन है, लेकिन जहाँ तक जो मेरी नॉलेज है मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड वाटर हिली एरियाज में के फुट हिल में। अब फुट हिल क्या है? जहाँ पर पहाड़ और मैदान मिलता है, दोनों प्लेन और हिल्स जहाँ मीट करते हैं, जॉइंट होता है, उसमें एक स्लोप होता है बोल्डर, और उसको हम लोग भाबर बोलते हैं। और भाबर एरिया में जो होता है कि हमें जहाँ पर सरफेस वाटर अवेलेबल नहीं है भाबर एरियाज में, उन एरियाज में हमें पानी की दिक्कत होती है क्योंकि हमारे ट्यूबवेल जो है वो बहुत डीप जाते हैं, और एक्यूफर जो है, जैसा कि राय साहब ने बताया कि एक्यूफर हमें ट्रेस नहीं हो पाते हैं, होते भी हैं तो वो लिमिटेड वॉल्यूम के और डिस्चार्ज के होते हैं। तो इसलिए हमें दोनों सेगमेंट में काम करना है कि हमें ऊपर की ओर पहाड़ों की ओर रिचार्जिंग का हम इस तरह से करें कि हमारे एक्यूफर लॉन्ग सस्टेनेबल हों, और प्लेन एरियाज में जो जैसे तराई का एरिया है हमारा, अगर चलते हैं हम इधर खटीमा, सितारगंज, उसके बाद किच्छा, पंतनगर, रुद्रपुर, जसपुर, उसके बाद इधर हमारा हरिद्वार, इधर कोटद्वार, हरिद्वार, भगवानपुर, और इधर सेलाकुई, और देन विकास नगर, हरबटपुर। तो ये सब एरिया जो हमारा उत्तराखंड में आता है, यहाँ हम बेसिकली हम ट्यूबवेल बेस्ड हैं। इवन हम देहरादून और हल्द्वानी में भी हम बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि हमारा जो सरफेस वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। अब क्यों डिप्लीट हो रहा है? रेन वाटर जो बेस्ड जितने रेन फेड रिवर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा पिछले 30 साल में डिस्चार्ज डिप्लीट हो गया है। जो आंकड़े हमारे बता रहे हैं, डिस्चार्ज हैज़ बीन रिड्यूस्ड अप टू 50%। जैसे गौला नदी है वो मेनली हल्द्वानी, काठगोदाम, लाल कुआं तक और बीच के एरिया को फेड करती है, तो उसका भी डिस्चार्ज दिन पर दिन घट रहा है। तो हमें हमारा जो लोड है अर्बन एरियाज में, अर्बन एरिया बढ़ने के कारण हमारा हल्द्वानी और नियर बाई के लिए बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल काला ढूंगी के आसपास जो सोर्सेज हैं वो भी डिप्लीट हो गए हैं, कोटाबाग, इवन इन जगहों में भी, और रामनगर, हमको सब जगह ट्यूबवेल लगाने पड़ रहे हैं। रामनगर में जो कोसी आती है उसमें भी बहुत पानी घट गया है, तो कोसी को कैसे रिचार्ज करना है इसमें बहुत फोकस हो रहा है, काम हो रहा है। बट मेरा अगर ये है कि हमने अभी गवर्नमेंट में अपने चीफ सेक्रेटरी सर से बात करी, और गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों ने, हमने बैठ के जब डिस्कशन हुआ है तो हम लोगों ने ये एक अथॉरिटी के लिए रिक्वेस्ट करी है चीफ सेक्रेटरी सर से, तो उन्होंने सहमति दी है। अभी हमारी नेक्स्ट बैठक मीटिंग होने वाली है। तो हमारा कहना ये है कि फर्स्ट स्प्रिंग देन रिवर, स्प्रिंग एंड रेन फेड रिवर रिजुनेशन स्टेट में अथॉरिटी बने, और उस अथॉरिटी के अंदर ही सारे रिचार्जिंग के काम हों, और जहां से सोर्स स्टार्ट हो रहा है दैट इज टॉप ऑफ द हिल, वहां से हम चल रहे हैं। मान लिया किसी वाटरशेड में चल रहे हैं, चाहे कोसी है, चाहे वो गोमती है, चाहे गोमती मीन्स बैजनाथ वाली गोमती, नॉट लखनऊ, गोमती है, या रामगंगा है जो दूधातोली से निकलती है। दूधातोली इज ए फॉरेस्ट की पामेर ऑफ उत्तराखंड, जिस पे लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है, जिसमें बांज, देवदार और उतीस के जंगल हैं, और जो कि 5 नदियों का उद्गम है। तो उसको कैसे हम कंजर्व करें? तो मेरा ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि हम जब यहाँ से चलेंगे तब हम नीचे तक बाउंड्री ऑफ द उत्तराखंड सोर्सेस को देख पाएंगे। तो वही हमारे रिचार्ज का मेन सोर्स है। नदियों को में भी हम अगर
शुरू से स्टार्ट से करेंगे टॉप ऑफ द हिल से, फिर उसमें स्प्रिंग्स को रिजोनोवेट करेंगे। स्प्रिंग के लिए जो हमारा जियो हाइड्रोलॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है उसमें चल रहा है काम, कई जगह काम हो रहा है और कई जगह स्टडी हो रही है। तो चाल खाल बनाने का जो कंसेप्ट है वो साइंटिफिक तरीके से करते हुए सारे स्प्रिंग्स को, सारे सोर्सेस को, और जो लगभग आंकड़े में है कि 500 के आसपास नदियां सूखने के कगार में है जो अगले 25 साल में सूख जाएंगी। अगर आप पिथौरागढ़ से लेंगे अप टू ट्यूनी तक, जिनके मोटे नाम तौर पर मैं नाम लूंगा, उनमें से आपका जो है अगर आप लेंगे बड़े बड़े नदियों को तो उनमें से गौला है और रामगंगा है, कोसी है, गगास है, गरुड़ गंगा है, और क्या कहते हैं कुजगढ़ है। कुजगढ़ तो सूख गई है, बीनो नदी है। उसके बाद इधर को आएंगे तो आटागाड़ है, पूर्वी नयार है, पश्चिमी नयार है। इनमें तो भी पानी है लेकिन बट इसमें भी फ्यूचर में दिक्कत आएगी। ये सब रेन फेड सोर्सेस आधारित हैं। तो इन सब के लिए हम रिचार्जिंग का जो प्लान बनाएंगे तब नीचे जाके हमारा डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो इस दिशा में भी हमें ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए जो ओरिजिनल हमारे सरफेस सोर्स हैं उनमें भी डिस्चार्ज बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे सोर्सेज पॉल्यूट हो गए हैं। अगर आप रुद्रपुर में देखें तो कल्याणी नदी, उसमें लगभग 100 mld का डिस्चार्ज रहता है, वो टोटली पॉल्यूटेड है। आज उसको ट्रीटमेंट करने की बात आ रही है तो ट्रीटमेंट 100 mld का, ट्रीटमेंट 100 mld का, तो वहाँ सीवर जनरेशन ही नहीं है। लेकिन सॉलिड वेस्ट और सीवर के कारण इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि उस शहर में 25 mld का सीवर जनरेशन नहीं है, बट वी हैव टू ट्रीट पॉल्यूटेड वाटर ऑफ 100 mld। ए बिग इकोनॉमिकल क्राइसिस, एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे स्टेट पर आएगा। तो इसको कैसे किया जाए, और सेम टाइम जो हमारे ऐसे जो इंडस्ट्रियल एरिया से बहने वाले सोर्सेस हैं, चाहे ढेला है और बहेला है और कल्याणी है, गौला है, जो भी नदियां हमारे ऐसे एरिया से जा रही हैं, पंतनगर से जो नदी गधेरा जा रहा है, उसका स्ट्रीम का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उन सब पे क्या है कि इंक्रोचमेंट भी एक इशू है। उसमें सॉलिड वेस्ट भी गिर रहा है, लोगों के घर डायरेक्टली उनमें बने हुए हैं और हमारे पास उसमें कोई सीवर सिस्टम बनाने के लिए एसेस नहीं है। तो कैसे हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, ये तो डोमेस्टिक की बात हो रही है। ऐसे ही एज वेल एज छोटे छोटे इंडस्ट्रीज का भी आ रहा है। तो इन सबको देखने की बात है कि कैसे इनका जो है वो अनट्रीटेड जो है वो वेस्ट जो है हमारा इनसे बचाया जाए। और जो अनट्रीटेड वेस्ट के कारण हमारा ग्राउंड वाटर फर्स्ट लेयर, हमारा जो फर्स्ट टॉप टेबल है हमारी सरफेस ग्राउंड वाटर की फर्स्ट लेयर है, वो भी पॉल्यूट हो रही है। तो उसमें जैसे कि भगवानपुर में और किच्छा में, पंतनगर में, काशीपुर में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्री के कारण। तो ये सब इशूज हैं, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। काम हो रहा है हमारा। कुछ नमामि गंगे में हमने 6 रिवर स्ट्रेचेज को पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज को ट्रीटमेंट का हमारा चल रहा है। लेकिन सेम टाइम जो CPCB है उनको ये काम करना है। और जहाँ तक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का है, मैं मोटे तौर पर बताऊं कि हमने एक रफ कैलकुलेट किया रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर। मैं नॉलेज थोड़ी शेयर करना चाहता हूं कि अभी जो हमारी 2022 की डिमांड है, अर्बन हमारी 60.48 mld है और रूरल 92.30 है। तो ओवरऑल 152 सॉरी, ये तो डिमांड हमारी जो MLD में है, सॉरी 2022 की 1682 MLD है, जिसमें से 743 MLD जो है हमारी ग्रामीण है, नगरी 939 MLD है, टोटल 1682 है। अगर इसको क्यूसेक में लेते हैं तो दैट इज टोटल 670 क्यूसेक, एंड अगर क्यूमैक में निकालते हैं तो 19 क्यूमैक्स। मैं आप लोगों की जानकारी में थोड़ा सा लाना चाह रहा था कि जो हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो लगभग 30% है। 30% का मतलब हुआ कि 30% इसका लगभग 1682 का 500 MLD पानी खाली ड्रिंकिंग के लिए हम जो है ग्राउंड से ले रहे हैं। ये एक डाटा है। अगर हम 2052 की बात करते हैं तो 2052 में हमें हमारी जो डिमांड आ रही है वो 1980 MLD हमने निकाली है, 1980 MLD, और जिसमें से आप देख लीजिए कि 600 MLD हम ग्राउंड वाटर निकालेंगे। और अब जो ग्राउंड वाटर है वो तो एक हमारा रिजर्व स्टॉक है। अगर आप आंकड़े देखेंगे, बड़े जोरदार आंकड़े हैं कि
उत्तराखंड में जो हमारी 2052 की डिमांड है इन क्यूमैक्स, वो आएगी 23 क्यूमैक आएगी, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 23,000 लीटर पर सेकेंड। तो ये, और जबकि आज की डिमांड हमारी अगर हम 22 की निकालते हैं तो 19 क्यूमैक है। अब आप ये देखिए कि आज की डेट में जो हमारी डिमांड है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी है, वो लीन पीरियड में लगभग 800 क्यूमैक्स डिस्चार्ज अवेलेबल है। गंगा, यमुना, टॉन्स और शारदा। शारदा मीन्स की काली, गौरी, रामगंगा, सरयू, जो कि पंचेसर में मिलती हैं। और उसके बाद इधर आप देखेंगे तो रामगंगा, जो ये पश्चिमी रामगंगा है, इसमें बहुत कम डिस्चार्ज है। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार में थोड़ा ठीक है, ये रेनफेड है। उसके बाद फिर अब आएंगे तो गंगा जी, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो उसमें भी ठीक डिस्चार्ज है क्योंकि रेन स्नोफेड है। उसके बाद टॉन्स और यमुना जी, ये सब मिला के 800 क्यूमेक डिस्चार्ज हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इसका मात्र 1% ही डिस्चार्ज हम यूज कर पाते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बिकॉज क्योंकि जितने भी स्नोफेड स्ट्रीम्स हैं, उन स्नोफेड स्ट्रीम को हम यूज नहीं कर सकते, हम सिंचाई में भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनमें डीप गॉर्ज होता है, और डीप गॉर्ज के कारण वो कहीं भी ग्रेविटी से उसको वाटर को यूज नहीं हो रहा है। और सिर्फ वो डैम, बड़े डैम बनाने, जैसे टिहरी डैम है या जो और डैम बन रहे हैं, या टॉन्स में जो डैम है, टॉन्स नदी से कोई भी ग्रेविटी स्कीम नहीं है, अलकनंदा से कोई ग्रेविटी नहीं है, भागीरथी से कोई ग्रेविटी स्कीम नहीं है। लेकिन सेम टाइम रेन फेड रिवर्स से 100% ग्रेविटी बेस्ड सिंचाई है, वाटर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर है। तो टोटल ड्रिंकिंग वाटर जो है और सिंचाई है वो हमारी रेन फेड रिवर्स, जबकि रेन फेड रिवर्स में 10% भी डिस्चार्ज अवेलेबल नहीं है, और उस पर डिपेंडेंसी 95% है स्टेट की। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि रेन फेड रिवर और स्प्रिंग एंड रेन फेड रिवर रिजुनेशन अथॉरिटी, जो कि टोटलिटी में सारे डिपार्टमेंट इस फील्ड पे काम करें, और सारे लोग एक एम्ब्रेला में, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में, इसमें काम करें, इसमें प्लानिंग हो। तो इस पे चल रहा है। इसमें हमने मेरा भी इंटरेस्ट था, तो मैंने ये बात रखी, तो ये बात इसमें सुनी गई है, और सरकार ने इसमें सहमति जताई, जल्दी ही ये बनेगा। और इसमें टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट, एनजीओ, स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, more than 25 department are working in the source sustainability. A lot of NGO are working, but वो टोटल कंप्रहेंसिव रूप में या टोटलिटी में दिख नहीं रहा है। तो इसको किस तरह से डिमांड है। अब हमारा जल जीवन मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन में हम जो भी सोर्सेज ले रहे हैं, उन सोर्सेज में कहाँ डिप्लीट हो रहे हैं, और उन डिप्लीट सोर्सेज में कहाँ हमको टॉप प्रायोरिटी पे काम करना है। चाहे वो प्लेन एरिया में करना है, जो पहाड़ से नदियां आ रही हैं, प्लेन एरिया की तरफ जा रही हैं, वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रही हैं, और प्लस उसमें ग्रेविटी बेस्ड शहरीकरण हो गया है, उसको हमें फेड करना है। तो ये है। तो मैं ज्यादा इस विषय में अब न बोलते हुए पुनः आपको क्यों कहता हूँ। जैसे जी, thank you, Pan sir, for sharing this, data and the kind of knowledge base which you have over a period of time would have gathered, sir. We would like to know from you, जैसे आपने बोला औद्योगिकरण हो रहा है, और there are multiple activities happening, और आपने ये भी कहा साथ में कि 30% की जो डिपेंडेंसी है वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी है as far as drinking water is concerned. तो सर, व्हाट इज योर टेक कि इतने सालों में, जैसे पिछले 10 सालों में, गत 10 वर्षों में तो काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो ये जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है, हाउ डू यू सी द चेंजेस इन द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ओवरऑल चेंजेस इन द पैटर्न? हाँ, ये तो बिल्कुल जरूर चेंजेस हुए हैं। डिस्चार्ज हमारे कम हुए हैं, हमारे कई ट्यूबवेल्स ड्राई हो गए हैं, और कई ट्यूबवेल्स में हमारे जो ट्यूबवेल्स में जो है वो आयरन डेफिशिएंसी आ गई है, और कुछ पॉल्यूशन भी हुआ है। तो ओवरऑल हमारा डिस्चार्ज भी घटा है, मतलब जो हमारा अवेलेबल वाटर है वो घटा है, उसका लेवल डाउन हुआ है। और जैसे जैसे हम और डिमांड हमारी बढ़ेगी, अभी 30% है, अगर धीरे धीरे और ज्यादा पलायन होगा और माइग्रेशन पहाड़ों से नीचे को होगा, और प्लेन एरियाज में रिचार्ज जोन में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और जो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड हैं जो एक रिचार्जिंग जोन होते हैं, उनसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वो एरिया कवर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारा और जो है सोर्स, हमारा डिस्चार्ज, वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल डाउन हो रहा है। और ये 30% अभी हमने
कैलकुलेट किया, ये 50% तक जा सकता है, क्योंकि तराई और प्लेन एरियाज में बहुत ज़्यादा जो है अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग माइग्रेट हो रहे हैं और बहुत रैपिडली जो है ग्रो कर रहा है। तो इसमें हमें ये देखना है कि हम दोनों का बैलेंस करें। हमारे पास जो रिवर्स हैं उन पे जो जिस पे डिस्चार्ज अवेलेबल है उसको हम बरसात में या लीन पीरियड के अलावा अदर डेज में हम उसको यूज करें, और ग्राउंड वाटर को तभी लें जब बिल्कुल हमारे समर में एकदम लीन पीरियड में हमें सरफेस वाटर नहीं मिल रहा है, तभी हम ग्राउंड वाटर को यूज करें। इस तरह की हमें पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी कार्य योजना भी होनी चाहिए। चाहे पहाड़ों में पंपिंग योजनाओं में हम इस तरह से करें कि जिन दिनों हमारे पास सोर्सेस में अवेलेबिलिटी है हम जो है वो ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर को यूज करें, और लीन पीरियड में जब हमें सोर्सेस में पानी नहीं है तब हम पंपिंग योजनाओं को करें, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी कम हो और वो पंपिंग योजनाओं पे डिपेंडेंसी कम हो। इसी प्रकार ट्यूबवेल पे भी डिपेंडेंसी कम हो। Right, sir. आप बोलिए। Thank you, sir, for sharing your inputs. And now we'll again go back to Dr. Garg. Dr. Garg, आपसे हम बात कर रहे थे, हम आप जी सर। 1 मिनट बस लेंगे। पंत साहब, हम थोड़ा स्प्रिंग पर बताना चाहते हैं कि हम लोग भी अभी टेरी गढ़वाल के 2 ब्लॉक प्रताप नगर और बिलंगना और ये ऊखी मठ रुद्रप्रयाग का, उसमें CGWB, सर्वे ऑफ इंडिया और NIA जो है तीनों मिल करके स्प्रिंग रेजुवेनेशन एंड स्प्रिंग से डिमार्केशन पर काम कर रहे हैं। इसी साल से अभी जस्ट स्टार्ट किया है। नहीं, बहुत बढ़िया है। अगर आप प्रताप नगर में कर रहे हैं तो जलपुर नदी में करिए। जलपुर नदी का जो ऊपर का कैचमेंट है सर, उसमें हम आपसे मतलब इंटरेक्ट करेंगे और आपसे एक मीटिंग करके कि आप लोगों का क्या इनपुट है, तो हम लोग उस हिसाब से होता है। उसमें आप प्रताप नगर से लंबगांव के बीच जो गांव पड़ रहे हैं उनमें अपर जोन में क्राइसिस है, जिसमें माजफ है, कई गांव है, मैं जानता हूं। मैं लगभग उत्तराखंड में 90% गांव एरिया देखा हूं, जानता हूं। रियली मैंने नाम भी मीटिंग में आपके एक्सपीरियंस को देखा है, तो बिल्कुल हम लोग आपसे करेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। So now we move to Dr. Garg. Dr. Garg, हम आपको सुन रहे थे और हम आपको सुन पा रहे थे, लेकिन शायद हमारी आवाज आप तक नहीं जा रही थी, तो हम चाहेंगे जहां से हमने छोड़ा वहीं से आप कंटिन्यू करिए। हम जानना चाहते हैं किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने एसोसिएशन, आपके एसोसिएशन अडॉप्ट कर रही है, इंडस्ट्रीज अडॉप्ट कर रही है, NOC जो नोटिफिकेशन आया है किस तरह से उसमें क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड टू द पॉलिसी मेकर्स हियर। ओवर टू यू डॉक्टर गर्ग। थैंक यू अनुपमा जी। इनफैक्ट थोड़ा नॉलेज मैं कह सकता हूँ कि मुझे आई गॉट इट फ्रॉम द पंत साहब, बिकॉज मैं भी उनको बहुत वर्षों से ये सब करते हुए देख रहा हूँ। अगेन तो बेसिकली मैंने बताया ना कि हम लोगों के लिए एक 2-3 बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने अभी लास्ट टाइम में हुआ था, कि जो मैंने एक EPR का इशू आपको डिस्कस किया था एंड इज हैपेंड। पंत साहब ने भी अपने को नरेट किया था कहीं ना कहीं कि प्रॉब्लम या इंडस्ट्री इतना अर्बनाइजेशन दोनों चीजें हैं उत्तराखंड में। इम्पैक्ट जब कोई ग्रो होता है तो वो इम्पैक्ट रिसोर्सेज पे कहीं ना कहीं आता है, बैक एंड पे रिसोर्स पे ही आता है। और उस रिसोर्स के अब वो चाहे अनचाहे, चूंकि वो अर्बनाइजेशन भी हो रहा है या हो सकता है, मैं उसको कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वो अब चूंकि थोड़ा सा रुकूंगी। गर्ग साहब, आपके यहाँ पे शायद थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कैमरा ऑफ करिए ताकि हम आपको सुन पाए, क्योंकि बैंडविड्थ की वजह से शायद क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है। जी ओके, ठीक। जी सर। नाउ आई एम प्रॉपर ऑडिबल नाउ। इन हेलो, यस प्लीज गो अहेड, गो अहेड सर। ओके, तो बेसिकली एक घंटा उसके सेंसिंग उसके कहीं ना कहीं गर्ग सर हम नहीं सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। बहुत हेलो हेलो, नहीं गर्ग साहब हम नहीं सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। नो। ओके, व्हाट इज द रीजन? नाउ इट इज क्लियर, it is clear. I suggest closer to the mic and stay at that one place maybe. Okay, Yeah, fine. So
अब हम लोगों ने ये क्योंकि इशू हमारे सामने था एंड वी आर एड्रेसिंग दिस इशू विद द concerning departments like CDWH, Mr. Prashant told ki we had a awareness session, awareness camps, and all these kind of activities. But the challenge with the industry again, they to cope up with the present laws. मेरा सजेशन ये होगा आपके फोरम से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पॉलिसी मेकर्स को इस बारे में एक थोड़ा एक जो लचीला रुख अपनाने की जरूरत है. पेनल्टी इम्पोजमेंट इज नॉट ए सॉल्यूशन. बेसिकली जब हम लोगों ने मिलके उस पर काम किया, डिपार्टमेंट इंडस्ट्री समझ रही है और वो अपनी तरफ से उस पर काम भी कर रही है. मेरा मानना यह है कि देखिए ये अल्टीमेटली सब्जेक्ट कंपेरेटिवली न्यू है. ऑल्दो पानी हर एक की जरूरत है, ये किसी भी प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट में जरूरत हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट ये नया है. CGWO के बारे में हम लोग भी बहुत बरसों से जानते हैं, लेकिन जब नई लॉ हो, नया तरीका हो, तो हमें किसी भी चीज को फोर्सफुली नहीं हाँकना है. मेरा अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ द उत्तराखंड और एंटायर इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, और खास तौर पे MSME जैसे छोटी इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा. हमारा सब्जेक्ट एक ही है कि हम इस बात को समझें और इस तरह के कानून को हम थोड़ा सा एक विंडो. अभी मैं इसका ताजा उदाहरण आपको देता हूं कि अभी मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जब मैं गया तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ आपका EPR का रजिस्ट्रेशन ठीक चल रहा है, तो उन्होंने स्टे को हमें होने नहीं दिया. मतलब उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू करा कि ठीक है यू आर डूइंग गुड. तो सेम जब ऑनरेबल हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, तो हमें लगता है कि इस चीज को, ऑल्दो मेरी बात से प्रशांत जी भी सहमत होंगे, आप लोग भी सहमत होंगे कि हमें इस बात को उस तरीके से करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री सब कंप्लाइंस करे. कंप्लाइंस करना हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, दोनों चीजें हैं. लेकिन कंप्लाइंस करने का जो तरीका हो वो ऐसा हो कि हर एक आदमी को लगे कि उसने कंप्लाइंस करके एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे, वाटर कंजर्वेशन पे काम किया है, रेदर देन कि वो उसको एक गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी लेके चले. वो तरीका मेरे को लगता है कि वो उचित नहीं है और उस पर हमें इस तरह की व्यवस्था को बनाने की जरूरत है. नंबर है. दूसरी चीज, लगातार इसमें अवेयरनेस कैंप चले, साल में कम से कम 2-3 बार. आप जैसे आपका सेशन अभी आ रहा है, हम चाहेंगे कि आप लोग हमारी इंडस्ट्री के साथ में आए, बैठे, उनको बताएं कि हम कैसे और वाटर को कंजर्व कैसे करें, वाटर को पोल्यूशन होने से बचाएं, या गवर्नमेंट को रेगुलेटरीज को भी हम उसके साथ में जोड़ के चलें. ये मेरा सुझाव होगा. थैंक यू. प्रशांत सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मैडम जैसा बताया जो है, और ये प्रॉब्लम मतलब जेन्युइन है, और हम लोग इंडस्ट्री की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको फॉरवर्ड भी करते हैं हेडक्वार्टर को. एक तो अभी हम बताना चाहेंगे कि जो वाटर ऑडिट एनुअली था, अब उसको जो है एवरी 2 इयर्स पर कर दिया है. अब उसका नोटिफिकेशन निकलने वाला ही है. जी, और वेरी एक और था जो प्रॉब्लम होती थी पीजोमीटर की, तो वो भी हम लोग हटा रहे हैं. मतलब अब उसके लिए एक क्लस्टर में 1 या 2 की जरूरत पड़ेगी, जो पहले होता था कि हर इंडस्ट्री को लगाने के लिए. तो हो सकता है कि वो भी विद इन 10 डेज ये दोनों चीज आ जाए आप लोगों के लिए. और ये तो बात एकदम सही है कि पेनाल्टी और इन्वायरमेंटल कंपनसेशन वाली बात. बट होता क्या है सर, जो हम कि कोर्ट वगैरह NGT का इतना प्रेशर रहता है, वो लोग ये कहते हैं कि आप साहब आप लगाते नहीं हो, ये नहीं करते हो. और जो फेस करता, फेस का मतलब ये है कि जैसे हम एक इंटरेक्शन का तरीका है, ये हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं. अभी यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यदि फिजिकली मीटिंग में होती तो इसका इम्पैक्ट और पड़ता. तो हमसे जो आप इंटरेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं रियल प्रॉब्लम है. फिर आप लोगों की प्रॉब्लम वहां जाते जाते जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पाते. और वो बीच में मैंने हम हो या कोई हो, वो एक मीडियम बनता है. उनको लगता है अरे यार आप लोग आकर के यहाँ उनकी बात करते हो, कोर्ट हमको डांट रहा है, तो वो शुरू हो जाती है. तो मैं कहूंगा ये चीज जो आप लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन थोड़ा ऊपर लेवल पर भी होना चाहिए.
तो इस प्रशांत बात सर, में मैं प्रशांत जी सुन के तो ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रीज भी अपना एफर्ट्स करना चाहती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैच है और चाहते हैं कि कंप्लायंस को कंप्लायंस की तरह से लिया जाए, पेनल्टी की तरह से नहीं। कर लेकिन लिया सर ये जाए। नोटिफिकेशन तो 2.5 साल पहले आ गया है ना, मतलब ये जो एनओसी मैं जी लेने जी के लिए भी। जी 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 हाँ, जी। इसमें मैं इस दो पे, चीजें हाँ हैं, सर, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। दोनों ओर से मतलब मीन्स कि इंडस्ट्री में हम सभी को नहीं करें, लेकिन कुछ लोग बहुत कैजुअल इसको लेते भी हैं, मतलब कई बार बिल्कुल समझाने सर। पर भी मानते नहीं है। हाँ। जी और कुछ जी। तो इतने अच्छे हैं कि रियली मैं बताऊं कि हम लोग वहाँ सीखते हैं उनके कंप्लायंस को देख करके। कोई नई चीज मिलती है तो लगता है कि अरे अच्छा ये भी किया जा सकता है। तो ऐसे भी लोग हैं। मैं इस पे एड ऑन करूंगा मैम। जो प्रशांत सर का बात एकदम जेन्यून है। 2.5 साल पहले एग्जैक्टली हम लोग क्या है कि अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे थे। हम्म। 2020-21 was the phase when the COVID was there, और हम लोग अपने एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप 2020 की मार्च से, क्योंकि ये समय हम लॉकडाउन में थे, अगर हम 2020 लगे, अब इस एग्जैक्टली 3 इयर्स हुआ है। तो इस 2 साल 2.5 साल के बीच में जो शुरुआती पीरियड था, पहला एक 2020-21 और 21-22 में हमारा ज्यादा समय, हमारी ज्यादा एनर्जी, हमारा ज्यादा सोर्स इस बात पे था कि हम अपने आप को जिंदा रखें या अपने कारोबार को जिंदा रखें। 20-21 देखेंगे तो सबसे पहला कि हम खुद जिंदा रहेंगे, और 21-22 में कारोबार रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद में कुछ नई चीजें आई। तो मेरा अगेन वही होता है कि कंप्लाइंस करने के लिए, जैसे बोला कि 3 पार्ट होते हैं। एक वो लोग जो हमेशा तैयार रहते हैं सरकार के साथ में, या नए नियम कायदे कानून को जिनको अनुपालना करने की एक उनके पास होता है, और वो कर भी देते हैं और अच्छा भी करते हैं। ये खाली सीजीडब्ल्यूए के साथ नहीं है। मैं पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, या मैं इवन अगर आप बीआईएस की बात करें, या फिर आप बात करें हमारे एनर्जी एफिशिएंसी की, वहां तक वो लोग ठीक ठाक। जब ये एनर्जी एफिशिएंसी पे तो हमारे पास कोई पेनल्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। दूसरे वो लोग जो समझाइश से काम कर लेते हैं, और तीसरे वो जो अक्सर हम भी समझते हैं और हम जानते हैं कि वो लोग नहीं कर पाते, कई रीजन होते जी। हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद उसी सी पार्ट में से हमको बी पार्ट या ए पार्ट में कन्वर्ट करके लाने की हमारी जिम्मेदारी है। एज एन एसोसिएशन चेयरमैन, एसोसिएशन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, मैं यही कहूंगा कि हमको इस पे लगातार अवेयरनेस कैंप चलाने होंगे। ये चीजें, क्योंकि अगेन वो की पेनल्टी हम डरा के किसी को करें, वो कर देगा एक बार तो, लेकिन वो उसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट जो जल जीवन मिशन या पानी की जरूरत हमारी अपनी है, वाटर कंजर्वेशन हमारी अपनी जरूरत है, क्योंकि हम लोग लगातार इसके बारे में डिफरेंट फोरम से भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको उस तरीके से अगर हम कराएंगे तो शायद इंडस्ट्री या ट्रेड या हमारे लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऐसा मेरा सुझाव है। और आपके फोरम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताएं कि पेनल्टी को कम करें, और अवेयरनेस को 1 साल के लिए और तेजी से करें। और एनजीटी ठीक है, वो इनको बोलता है, वो हमारे ऊपर में नोटिस के भी आ गए, या हमारे इंडस्ट्री को पेनलाइज भी किया गया, या उनको उस तरह का कंपनसेशन भी लेने की बात है। लेकिन बेटर होगा कि हम 1 साल के लिए इन चीजों को रोक के पहले अवेयरनेस पे आ जाए, तो स्थिति और बेटर होगी, मेरा मानना है। बिल्कुल थैंक यू। डॉक्टर गर्ग। और अभी ऐसा, इस जितना अभी हमने डायलॉग कन्वर्सेशन सुना उसमें यही दिखाई दे रहा है कि पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दे बोथ आर एट द सेम पेज, एंड लेट्स सी how technological interventions can act as a catalyst in bridging this gap. So we have with us Mr. Vinay Chitraju, who is co-founder Prism Technology. So I would like to say that he comes from a research background from IIT Kanpur, and now building up and working in building up advanced technologies to help water users become water custodians. So, Vinay ji, I would like to know from you, the challenges in the ground sector in India are numerous, and of course, there are various options. One is the policies, second is the initiative from the industry side. Now, how do you see that the technologies and the tools which you spoke about in the brief discussion which we had, what kind of technologies are available and how it can help users and policymakers both in better groundwater management?
And how do you think, even data management is important and how it can support the overall thinking as far as groundwater management is concerned in the country? Over to you, Vinay. Thank you, Anupama ji. Is my screen visible and my audio, am I audible? Yes, yes, please. Yeah, great. So thank you, Anupama ji, and other esteemed panelists who are available for this discussion. It is very interesting. For the last so 1.5 hour, we have been debating on various topics which have a lot of so width and the depth. Okay, so like how the Gag sir was saying that so this is a new subject altogether. So for everyone, including what I see is even for the governments. So we have seen that many state governments do not have the state groundwater board or the authorities. Okay, so technically, which means that the whole groundwater is, though the usage has been there for a long time, it's a comparatively very new subject. Okay, so that's what we realized in the last 7 years of our research, having come from so education academic background from a research institute like IIT Kanpur. So we felt so when there is so much of a crisis going on in a natural resource like water, without which there is no life. Okay, and but where we see that so most of the talent and most of the research and in the advanced technologies are going into little not so important activities like social media, e-commerce, so where everybody is putting brains, a lot of advanced technologies like machine learning and artificial intelligence kind of technologies are getting into. So if something like a social media and e-commerce is going such a large technology penetration, what should be the technology penetration in something like a water and other environmentally sensitive topics? यहाँ पे कितना जाना चाहिए is what our so research has started in this in 2015. So Kritsnam Technologies is a company which evolved from IIT Kanpur Research and Innovation Center. So it's been almost 7 years, where we have understood that so this is a multidisciplinary subject. It is not that there's one expert or two experts just coming and solving a problem. It's a multidisciplinary subject between electronics, hydraulics, hydrology, hydrogeology, and also data analytics. So we have built a very robust team in the experts, PhDs from multiple departments, and see how do we collaborate together to come up with the technological solutions to solve the problem needs of the society. So we have been supported by the Government of India through Technology Development Board for Atal Bhujal Yojana, and we have got major recognitions for the Jal Jeevan Mission and also the Amrut 2.0 Innovation Challenge. So this shows that the Government of India is also encouraging the technology penetrations like us into the sensitive topics like so the water resources. Okay, so having come to the topic for the today's discussion is the groundwater governance, and so the how can the technology be used in this? So it reminds me of a common problem, so of which we use in our day-to-day life. Why do we wear helmet and why do we wear seat belt while driving? So there are two types of people who look at it. So one person says that so I wear helmet because वहाँ पे चौके में police खड़ा है. The other person wear it because so it is a safety for me. My family is dependent on me. It is my responsibility to take care of this. So similarly, groundwater is something very similar stage is what I can compare. The groundwater depletion is a rising risk for the Indian businesses. So as the study says that so 83% industries reported risk of inadequate water availability, and 62% of the Indian businesses depend on the groundwater source. There's a lot of investment which goes from the so from the entrepreneur in making the project or making the facility, investing into the facility. But what happens if there is no available, if the water is not available? So where 62% of the Indian businesses are there. So it is the rising risk. So if we see, so the tone why NGT or even CGW is doing it, because there is a real concern of the depleting groundwater levels. So it's a social concern. It's a risk. So why police is do penalize for the ground for not wearing a helmet? It is not because so somebody is not there. It is because there is a rising risk which people are not fully aware of. So including the Eurasia Group reported, so water stress is one of the top 10 risks in 2023, which is equally comparable with COVID and the war between the ongoing war in the Russia-Ukraine war. So water risk stress is a comparable risk for the countries, for the people, for the businesses, for everyone as a nation. So
considering the rising risk of the because of the depletion of the groundwater depletion. So the businesses need a paradigm shift, so to on the way they look at the water. So having interacted with more than 5,000 businesses across the India in the last 5 years, so we see there is a slight change in the way people look at the water. So 5 years back, people said that, "हाँ भाई पानी है तो है, पानी जब pump so motor switch on करेगा तो पानी आ रहा है." But the situation has been changing over the last 5 years. So it is not the same anymore. So like sir was so rightly saying that groundwater is like a savings account. Okay, it is not our current account. Savings account जब जरूरत है तभी उसको इस्तेमाल करना है, but we should not be depending on the savings account. जब saving account में depend करेंगे तो फिर so at some point of time तो कभी zero होना ही है. Okay, so we need to ensure that so there is a shift in paradigm. So we need to start looking at a different angle on way we look at the water and way we look at the groundwater specifically. Okay, so this is a simple example which I take is, what is the first step in a weight loss journey? So once suddenly we realize that, okay, so the groundwater is a depleting resource, it is a risk. अब उस पे कुछ हमको करना है. Once we realize that it is required, so similarly if we feel that हम लोग थोड़ा सा overweight है, अब उसको थोड़ा सा weight loss करना है, so the very evident things is हमको diet plan करना है, हमको gym जाना है, हमको exercise करना है. But the most important part even before this is we have to be more weight conscious, which means that so जब आप weight conscious हो जाते हैं, आप 10 to 20% of the weight तो अपने आप कम हो जाता है. So it means that आप कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी so ये कम करने से पहले, well, there is an option of going by lift and the stairs. हाँ ठीक है, मैं weight conscious हूँ, let me take stairs. हाँ मैं so weight conscious हूँ, so I will skip eating a sweet today. So it is about consistent tracking of your weight and so consistent tracking of your data on a day-to-day basis, weekly basis. Analyzing your data is what is the first step in this. To reinforce that, then you need to have a more diet plans, and then you need to have a more strict exercise plan to ensure that so you become more strict. So similarly, in the current scenario, what we say is Indian businesses need to become more water conscious. Okay, that is the very first step for Indian businesses to take so हाँ भाई इसमें rising water risk में, with the rising government policies में, हमको सबसे पहले क्या होना कि we have to become more water conscious. Okay, now the question is about how do we become water conscious? What are the steps? What are the step 1, 2, 3 key in which we can say that अभी हम लोग water conscious है? So to summarize this, so we have come up with a simple process, so simple 1, 2, 3 steps on how do the industries can become more water conscious. So the first step in becoming the water conscious journey is we should know our water footprint from all the sources. So usually the 3 common sources which we have seen any project will have is the surface water, which comes through the municipality or the industrial corporations. Second one is the groundwater, and third one is so people purchase water from outside, either the treated water or from the water tankers is why. So any project should be, for the first step is they need to have a water footprint on a daily, weekly and monthly basis, and we should be looking at this data. So how are we, so what is my total water footprint for today? What is my total water footprint for tomorrow, day after tomorrow? What is my last week, the next week, this week, the following week? And what is your quarterly water footprint, so monthly water footprint, half yearly, annually? So this analysis has to be done by the so businesses on a very consistent basis from all your water resources. And once we know our water footprint, it is 10 KLD, 20 KLD, 50 KLD, 100 KLD, 1000 KLD, or even a small 3 KLD, 5 KLD, whoever the business is, so we should know what is our water consumption, what is our water usage as a project, as a premises. हम लोग कितना पानी इस्तेमाल करते से बाहर से. There could be a lot of internal reusage of your water, but so हम लोग बाहर से कितना पानी हमको जरूरत पड़ रही है is what the very first step in our water conscious journey is, knowing your water footprint from all your sources. If you have multiple projects, so एक आपका देहरादून में है, एक रुड़की में है, एक आपका हरिद्वार में है, then you should have your so as an entrepreneur or as the owner of all the multiple industries, should have your water footprint at one location. My Dehradun plant is doing good. My Haridwar plant is so having an efficiency of this much. So complete water footprint at a single source is what you want. Second thing is the water budgeting. See, now that so most of the industries and the other infrastructure users have started considering water as the expense in terms of my raw material.
My bill of material, water is also one of the entity, especially for the water intensive plants like pharmaceuticals, textiles, etc. Okay, so like how we do our so account budgeting, so like how we allocate our money for sales and marketing के लिए इतना पैसा है, so production के लिए इतना पैसा है, so अपना transport के travel के लिए इतना पैसा है, and so for raw material purchase के लिए इतना पैसा है. So how we do our finance budgeting, the same way we need to do the internal water budgeting in terms of, okay, I have 5 processes, 6 processes, 1 canteen, 1 toilets, and all. So we need to allocate approximate water consumption, water allocation for each other in terms of budget. Okay, so my demand, my total water usage, let's say 50 KLD, 10 KL will go to process 1, 10 KL will go to process 2, 5 KL will go to canteen, 5 KL will go to the so the residence. So that is how we need to do the water budgeting, and we need to have a system which continuously report the data in a digital format by sending the data in a so automated fashion, so that you don't put efforts on the data collection. So you should look at the system as a whole and not the data as a collection. So based on the data, our effort should be more on how do we utilize this data efficiently is how we need to do our internal water budgeting. Once we do this internal water budgeting, the third step is defining of the metrics and comparing with the peers. Okay, so there is something called as a water intensity ratio, which is defined by SEBI, Security Exchanges Board of India, which has, as part of their BRSR, Business Responsibility and Sustainability Reporting, as part of the SEBI guidelines, have started reporting the water intensity ratio. That means how much water did I use per unit turnover? How much water did I use per the unit production? Let's say 1 kg of paper, how much water did we use? Or how much water did we use to produce one production volume? It is like maybe, let's say, 1 ton of steel. How much water did we use if you are an infrastructure which is having a flow space? Let's say you are a commercial complex, or let's say an IT park. How much water is used for the 1 SFT of land, or 1 SFT of the flow space? Or if it's a pure employee driven, how much water did we use per, so for the number of employees, software companies that per employee, how much water we are using. So these are the different metrics which we need to define suitable for each industry type, and should be in a position to start comparing with the peers. Okay, so a paper industry cannot be compared with a hospital. A hospital cannot be compared with an IT park. An IT park cannot be compared with a power plant. So it has to be compared with the respective industry, saying that, okay, I'm a hospital with a 50 bed. There is one more hospital with a 50 bed. What is my water intensity ratio per bed in our hospital versus what is my water intensity ratio per bed in the other hospital? And why are we different? That is how the peer comparison should be there, and learn from the best practices which is being adopted from one place to other place, because this is a subject of mutual learning and not a competitive place. This is a collaborative space, because we are all in this journey of conservation and doing good as a as a nation, what we are contributing. So this is a collaborative approach and not a competitive approach. So that is what is required in this space. Whereas when it comes to as a businessman, the cost is something the businessman is very clearly focused on. So there are 2 costs of the water which are usually overlooked. So in our interaction with more than so a few thousands of industries in the last 5 years, whenever we say that what is the cost of water, we say, sir, pani to hamare liye free hai. With the CGW regulation, people started saying that so the cost of water is, let's say, 3 rupees per KL, 5 rupees per KL, based on the demand and the geography. But the 2 major costs which are usually overlooked is the pumping cost. We have clearly seen from the data saying that so 5 साल पहले जब मेरा टंकी 10,000 लीटर का टंकी भरने के लिए 1 घंटा लगता था, अभी हमको 1.5-2 घंटा लगता है. That is because of the depleting groundwater table, and so the more cost which you are putting on your pumping, which is completely invisible, because this happens at a very low level, at a operator level. So at the end of the day, we see that my water is being fulfilled, but 5 years back, it takes 1 hour to pump the same water. Now it is taking 2 hours it is almost double the cost which happened in the last 5 years. This is the pace at which the cost of the pumping is increasing because of the depleting water tables. And the same thing on the treatment, so with the rise in overall inflation, the cost of the more water we pump, the more the cost of the treatment, so which is a fairly expensive process, so as part of in the water ecosystem. So these are the 2 hidden costs which we should be looking at. And more on the policy maker side, so where so again, sir was also rightly mentioning that, so this being a new concept, so we need more data for the right policy making. So in the Gazette notification which was released in September 24, 2020, there are the notification was very thoughtful, very robust, but with a lot of assumptions.
Okay, we need to continuously validate these assumptions with the real-time data, because so the dynamics are very uncertain. The rainfall patterns are very uncertain. So the environmental factors are very uncertain. The user behavior is very uncertain. Okay, so we need to change these policies, or we need to mold these policies a little more dynamically than this. Like so we have seen in some of the places of the we in our experience in working in the irrigation space, the canal roster plan. So they take almost 30-year-old roster plan is being used for the canal roster plan. Because जब हमने डैम बनाया है 1970s में 1980s में, तब हमने एक रोस्टर प्लान बनाया कि मतलब so एक दिन इनको जाना चाहिए, एक दिन इनको जाना चाहिए. अभी भी even after 30 years, वो though there are many dynamics changed across, the roster plan has been still the same, because the system was not equipped for a continuous feedback of the data. The same way, so the data which the users are using, whether it is the groundwater level data or the groundwater abstraction data, the policymakers should consistently use this data for the efficient. And if suppose, let's say, if the rainfall is good this year, so because it's a God gift, the policymakers should also be in a position to use this data and so ease out the policies for the industries or the other so the saying that okay, is bar barish acha hua hai, the groundwater table has increased, so we are reducing the price of so unit price this year. Okay, next year फिर से अगर if the rainfall is not high, so we increase it. So it has to be a pure so data driven policies, and not that one time एक बार हमने बना दिया है and that is going to continue for the next 20 years or 30 years. It is not, unfortunately. So as an organization, this is what we do primarily is, so we have a Dhara Live as a platform, which is a water consciousness platform. Okay, so which reports daily, reporting on the water consumption in easy to usage platforms like WhatsApp, SMS, email, mobile apps, and all. Is where our data, water data is available. Like, आज हमने इतना पानी हमने इस्तेमाल किया है. That is what my water. That is what, if imagine you getting in a WhatsApp message. And similarly, so how many hours your pump was running. So we give this kind of information of what is the pump running hours, and we give it downloadable reports. So in internal and external reporting. For our internal reporting, and also to report to any external agencies. And smart alerts when somebody is crossing any specific limits. You can set your own usage limits, and when somebody is crossing a limit, so we'll be giving an alert saying that okay, so you have crossed your limit for the day. So this is our flagship product, which is a Dhara Smart Ultrasonic Flow Meter. It's a plug-and-play battery-operated device which has a 3 to 5 years of battery life. It has a seamless communication with inbuilt dual SIM communication on 2G and 4G. So it is certified by ISO 4064 from FCRI. It is all-weather protected, so it is open built for any kind of weather conditions with IP68 certification, which the meter and the telemetry, including of is IP68 certified. It follows the ultrasonic transit time principle, which means there is no moving part and there is no pressure loss in it. And it is completely designed, developed, and manufactured in-house within India, designed from IIT Kanpur there. So most of the instrumentation we see are mostly imported from either China or from the European countries. But yeah, we are glad to be one of the very few smart so instrument manufacturers in the water space in India. So these are the two common instruments which people usually get confused with, and also so need a little bit of clarity. That is, what are the instrumentation usually used in the groundwater? Usually there are two instruments, which is one for the water level monitoring and second for the water abstraction monitoring. For the water level monitoring, we use something called as a piezometer or the digital water level recorder. Okay, so where it continuously measures the how is my water table going up and down, which has been commonly known for everyone in the groundwater space, all the consultants, all the departments, and most of the users also. But the digital flow meter, which is used for the how much of the quantum which is being abstracted from the ground, is one of the very important data, which is a very localized data, which we need to have a hold on. So this digital flow meter, in fact, a smart digital flow meter, which continuously sends the data to the remote from the remote locations to easily be accessible in the form of SMS, WhatsApp, email, and mobile app, is a very important device in this groundwater space to ensure to keep a track of your water consumption from the ground. And this is some of our contribution to in this space. We have been helping Indian organizations becoming water conscious. More than 1,000 plus Indian businesses we helped, and the device Dhara Smart Ultrasonic Flow Meter is fully complied with CGWA tamper-proof flow meter guidelines. And some of our premium customers are Oberoi Hotels, Trident Hotels, Ultratech Cement, Castrol, Adani, Amar Raja, Hindustan Unilever,
is what some of the customers we have been actively working with. And yeah, this is how the meters are usually installed at the bore wells, so which we have the install base. More than 2,000 plus groundwater abstraction points have been metered across the India in various states, including Uttarakhand. Quite a few installations we have, and this is a very simple plug and play device. For just plug the device and you start getting the device in your mobile app directly. Thank you. This is about us and what we can contribute. Thank you, Vinay. And now is the time to hear from our participants. There are few queries which I have already received, but I would also be interested if they can speak directly and ask their queries. So can we unmute Mr. B.B. Tiwari? Tiwari sir, can you please unmute yourself from your side also and ask your query, if you have any? जी हाँ जी सर गुड आफ्टरनून। पहले तो सबों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सब सुख शांति रहे, सब स्वस्थ रहो। You see, I have questions which I put on the chat, and which starts from the base. Like we are all talking about Uttarakhand. I'm saying that first look at the Himalayas. You're talking of, various silos. I've been into bureaucracy and left because the beneficiary and the benefactor is the same. So I'm coming back to it now. When we are talking about specific points as elixir of life, हमें पहले तो सबसे पहले we have to look at what is the water flow that is coming from the water table, which is the biggest, the Tibet and the Ganges, etc. that come down, and from there trace down, because that is the origin. जब आपकी जड़ी खराब है आगे क्या करोगे? Second, after that, when we are talking about so many rules and regulation, अरे आप empower कर दो women को, empower कर दो. इस देश में किसी ने एनवायरनमेंट नहीं सुना था. मैं स्कूल में पढ़ता था जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था. दैट इज द लेवल, बिकॉज मोस्ट पीपल इन उत्तराखंड आर अबव द मूलधारा चक्र. तो उसी को जिम्मेवार नागरिक बना दो, उसको मोटिवेशन दे दो. नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट पंजी सेड एंड द अदर जेंटलमैन, आई डोंट नो हिज नेम, राय साहब और समथिंग. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. विद द false this thing of sustained growth and development, you have encroached upon everything that is available in name of water. Everything. All the nalas, all the springs, all the, what you call, garages, the springs, the streams. तो उसमें गलती किसकी है? हमारी है ना. I mean, तिवारी जी, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगी. हमारे इस प्रोग्राम का एजेंडा है कि इंडस्ट्रीज की अगर कुछ क्वेरी है विद रिगार्ड्स टू ग्राउंड वाटर coming to the मैनेजमेंट, query. so I'm coming. your points and suggestions well taken, but if the question is, they are all domain experts. My humble request is that why are we working in silos? Number one, why can't we all be together? मेरी निगाह में ये शिव जी का त्रिशूल है. After I came back from Singapore, I adopted a village. There was no ministry called Ministry of Environment. मैंने अपने हाथों से किया है. If I can do it, all these people, especially Vinay, can bring in that input. And that input can be used by Panji, can be used by Rai Saab, can be used by Dr. Garg, etc. Right? It's only tweaking a little bit. So it is important to understand कि हम अपने आप खराब कर रहे हैं. अब जैसे मसूरी से 269 नाला आते हैं और इस पे ना कि नदी ऐसी की तैसी होगी उसकी. Every river that everybody has named. So whose fault is it? We have not looked at it in terms. What do you do with the NGT rule? What will you do? अभी जोशीमठ का हुआ था. Sitting here from Delhi because I have a hip fracture. I did a complete movement. Shivaji, I need to cut short this conversation here. I totally agree with you. My humble request would be, why can't we get green bonds? Why can't we have green warriors? You have to save water now. There is no other way. Certainly.
And I in will case echo anything, your words. I do echo your words, and you are certainly saying right that every individual has to take the ownership. We need to break the silos, and I think there are a lot of initiatives happening in this direction already. So we do need people like you who can be the torch bearers in their respective areas and can take the baton forward, collecting along with the community. So thank you so much, Tiwari ji. thank you. Due to paucity of time, I need to move on to the Okay. next. But I Yes. really thank you for participating and sharing your views. Certainly, thank you. Thank you. Can we now unmute Mr. Praveen Singh? Praveen Sharma, sorry, Praveen Sharma. Can we unmute Mr. Praveen Sharma? जी, बताएं प्रवीण जी. प्रवीण जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, प्रवीण जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Let's move ahead to Mr. Abhijit Singh. Can we unmute Mr. Abhijit Sinha? Abhijit Sinha. Can we unmute Mr. Abhijit Sinha? Ji. Am I audible? Yes, Abhijit ji, please, पूछिए. Yeah, good afternoon, everybody. I'm just attending this webinar. Thanks for sending the link to me. I'm from Kolkata. Basically, I was just listening to all the views, especially Mr. Pant, as well as Mr. Vinay. Starting with Mr. Pant, as he was describing the scarcity of water problem that the rivers are drying. And Mr. Vinay, as you told, the total steps to be taken in to create the awareness of saving the water. We understand the main scarcity for the water crisis, and the main reason for the water crisis is the water wastage. Water wastage in terms of the various technologies which had been in India with us since last more than a decade. And that's the reason that due to the mindset and the blockades we had in our mind, we use the technologies. And now today we are in a position where we understand that water wastage has become a big hindrance for the survival. Even I'm representing a group or a company, you can say Liquid Technologies International Japan, who have a unique technology with them, which is spread world over in the European countries as well as in America also. And Japan is day by day just rising with that technology, that is ceramic beads technology. This technology, keeping the parameters apart, decreases total scaling in water, decreases iron deposition in water, decreases corrosion in water, without wasting 0% of water. No maintenance required. I just wanted to meet any of the higher ups from Uttarakhand government if they are interested to adopt this technology. It is a very new and latest technology. We will support you with all the testimonials and documents. This is antimicrobial, deodorizing the water, as well as saving water. Abhijit ji, I would like to check you here. Thank you for sharing your knowledge about the technology and other things, but we would like to restrict this forum for the questions pertaining to groundwater management. We are really glad that you've joined it, and we are Yeah, doing I just wanted to pass on the message, ma'am. If anybody interested Please do to that in adapt the this chat for box. saving the water as Please, well as the please, energy, please, may please please do that in the chat box. Please do that in the chat box. Thank you. There is a question by Mr. Anup Singh. He wants to know, we need proper description brochure for how to check my NOC if it is completed, or how do I identify NOC required in these guidelines, and about quantity of water using by a factory, all rules regarding groundwater usages. सुपन सर, आप बताना चाहेंगे इस पे कुछ?
या प्रशांत सर, राय साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी वो वो 90% एक्चुअली हमारी वेबसाइट पर जाएं जो है और जी। ऊपर गाइडलाइन अवेलेबल है हम्म, 24 सितंबर 2020 की, और उसमें देख लें कि, और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि यदि माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में है और ग्राउंड वाटर यूजेज लेस देन 10 KLD है, देन देयर इज नो नीड टू टेक द एनओसी फ्रॉम CGWA। लेकिन माइक्रो और स्मॉल होते हुए भी और रिक्वायरमेंट मोर देन 10 KLD है, देन उनको एनओसी लेनी है आपसे। ठीक है जी। अनूप जी, अगर आप डायरेक्ट भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, विल अनम्यूट यू। Okay. There is another question. I mean, I don't know how, what would be the. Okay, so Dr. P.C. Chanyal is asking, industrial units are using underground water over limit against the government guidelines. How can we check and monitor such type of practices? Dr. Chanyal, we would have been glad अगर आप ये direct पूछते, and we would have got a slight introduction of what you do. Would have been better for us. But anybody, would you like to answer? Industrial units are using underground water over limit against the government guidelines. How can we check and monitor such type of practices? Yes, Anupama मैडम ji. So, ऐसा है कि yeah, sir, please go ahead. रिप्लाई कर। हाँ, हम लोग जो है अभी जो वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए मीटर लगा रहे हैं, तो पहले तो डिजिटल वाटर थे, नाउ दे आर अटैच विद टेलीमेट्री सिस्टम। तो हमारे यहाँ वो डाटा आता भी रहता है, फिर हम टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्शन भी इंडस्ट्री का करते हैं, और इफ दे आर गोइंग टू फॉल्ट इन द लिमिटेड जो एनओसी है उससे ज्यादा लेते हैं, तो देन द ईसी विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दैट इंडस्ट्री आल्सो। विनय, आप ऐड ऑन करना चाहेंगे कुछ? Vinay, would you like to add on something? Okay. So few more questions. By the time we hear from our participants, if you have anything else, you want to ask something, please put forward your query in the chat box. Vinay, would you like to add anything to what Prashant ji has just mentioned? Yeah. So, I mean, there was a few seconds of disconnection. So, one thing which I would like to add from the technology standpoint is, see, we understand that, so most of the users are crossing the limits because of lack of visibility. It is not an intent to cross the limit, but it is a lack of visibility and the process of, so I don't know when am I crossing the limits. And this process is also very complex. For example, if we see there is an industry which has, let's say, 3 borewells, the limit of extraction, suppose somebody 3 borewells together should use 50 KL. Okay, so it is very difficult to collaborate between these 3 borewells from 3 different devices who are running independently. Somebody is running borewell A, somebody is running else borewell B, somebody is running borewell C. So it becomes difficult to track what is my total usage, so and give a correct alert to somebody is crossing the limit. But a better, so what we can suggest is, so we should, the moment we start seeing our data on a day-to-day basis, it becomes a habit. Okay, so like how, so we need not ask anyone like, so by bank mein kitna paisa hai. Okay, because so we know that so I'm very conscious about my bank balance, and I know that so if not to a last digit unit number, but at least I can say that so 50,000 hai, 60,000 hai, 55,000. So with a plus or minus 10-20% if so accuracy they will be able to say. So similarly, this same control is what people should have on their water data. The moment we say that so ki, my planned usage is plus or minus 5% of, let's say, 40 KL, unless there is an anomaly which comes up, so say that suddenly so my limit is 50 KL, I use plus or minus 45 KL से 48 से 45 KL के बीच में यूज करता हूँ, बट अचानक से किसी दिन मेरे को अगर 60-70 KL यूज करना पड़ता है, that can be done as a measure saying that so what went wrong. So like for example, in one of the cases what we identified was somebody forgot to switch off the motor in the night, borewell ka. So it was pumping the whole night,
and the next day the customer came back to saying that नहीं आपका मीटर गलत रीडिंग दे रहा है. So but then when we clearly able to point out saying that sir आपका मोटर शाम को 7 बजे चालू हुआ है, सुबह 6 बजे तक चल रहा था. So that's when we were able to identify saying that the person who forgot to switch off the motor has been identified and saying that the necessary action has been taken. So this is the power of the data which we can use it. So we need to empower people, and people should be empowered by the data rather than more of a policy or more of a regulation. See, at the end of the day, more water usage is a business cost for them. So the businesses should be more aware of the usage of such kind of data and be more conscious about how much water they are using. Anomalies can be managed. If one day I exceed my limit, it is not a major problem. But if my usage itself is 20% of my limit, that is a problem which we need to address as a at a little higher level of how should I bring my daily usage from 60 to 50? What should we do? Is what we need to work on. Right. Trivedi ji, would you like to ask something? Can we please unmute Mr. G.H. Trivedi? Trivedi ji, you may ask your question, please. Hello. Please, go ahead. Can we unmute Mr. Trivedi? Trivedi ji, आप खुद भी unmute करिए अपने को. Or you may, yeah, please. Yeah. See, I'm G.H. Please. Trivedi. I'm in Gujarat, and I was earlier with the Gujarat Pollution Control Board. I was as a chief engineer. So some of the thing I would like to add. First of all, I would like to thank to the CGW authority, because from Gujarat we have represented for the cluster-based piezometer approach. So now Mr. Prashant has informed that it has been accepted. I think it has been accepted before 1.5 months back, but still notification is not there. So while submitting the progress report, still the authority is insisting for piezometer things. So my request to Mr. Prashant that if the notification is come, then it will be very well mentioned in the report, progress report to the authority. Second thing, water audit now twice in a, once in a 2 year. That is a very encourageable stage, and it is good. Some of the good practices we are following in Gujarat, I would like to mention that we have got a treated water reuse policy 2018. So according to this policy, whatever a sewage treated effluent is there, now industry has started reusing that water. And in Gujarat, more than 500 MLD of the treated water is being used by the industrial clusters in Surat, textile cluster particularly, and in Ahmedabad. They are paying the 45% of the freshwater charge also. So this type of a policy should be encouraged and treated as far as possible. Whatever sewage treatment plant we are mentioning, and then after sewage treatment जो भी पानी है हमारा वो नदी में चला जाता है, तो हम जितना भी reuse करेंगे. In fact, in Gujarat, people are paying the cost for that. About our according to our policy, treated water policy, whatever charge of the fresh water, 45% we are taking for the sewage treated water. Another thing, my submission to Mr. Pant is there is a polluted river stages implementation. Central Pollution Control Board has identified more than 350 rivers as a polluted river. The matter was in NGT, and NGT has passed an order, and all the state government has submitted their action plan for that, and action plan implementation is there. So Mr. Pant has mentioned that there is 100 MLD water in the river and it is getting polluted, and what to do with that. I am sure that that must have been included in the PR stages. So state government has to work hard and have to have STPs for their sewage, and they have to treat the water. Otherwise, there is no option for that, because more than 350 rivers are polluted in the country. Another thing is their cost of the fresh water. Mr. Vinayak has mentioned that the pumping cost and this thing is there. But unless we increase the cost of the fresh water, people will not encourage to reuse that water. So fresh water has to be, see, in Gujarat, we have got a policy to every year 10% increase in the fresh water charges. So water has to be made costly, then only the industrial things will be, reuse of the industrial thing will be there. And last thing I would like to mention that in Gujarat, for the air emissions, means whatever emission is there from the industries, we have got a ETS scheme,
emission trading scheme. Like that, water trading scheme also may be implemented. My request to Mr. Prashant that we can think on the WTS, like emission trading scheme. We have got emission trading in Surat and Ahmedabad, and it is successfully started. It is like a share bazaar. Whatever credit you earn, that can be sold to the person who need it. So these 3-4 observations are there. And my one request to Mr. Prashant that if the piezometer notification is out, if you can respond on this, it will be very useful to the everybody, because it was our representation from Surat and Jaipur to the ministry. Thank you very much. Thank you, Trivedi ji, for joining us and for your sharing your views. In fact, like I said, that's more of the Uttarakhand chapter. We wanted that, industries from Uttarakhand come forward and ask their queries if they are facing any challenges in terms of groundwater management. But it's always good to have people from the sector who share their knowledge. And I believe that such kind of platforms, like the programs that we do, the idea is to spread awareness around water on various issues pertaining to water. Let's discuss and at least come forward and bridge the gap. So that's the whole idea. I will again request if there is anybody who would like to ask any query specific to Uttarakhand, belongs to Uttarakhand, and wants to know something with regards to the notification which has come up, the application process, or if you have applied for it and you are facing some challenges, you may please come forward and ask your query. And if nothing, then maybe I would like to pause here and would like to close the program. Thank you. Thank you, ma'am. So as I do not see more queries in the chat box, it's more about appreciating your work, Vinay, which we see. Also, there are compliments coming in. So thank you so much for joining us for this program. I am very thankful to our panelists, Prashant ji, Pansam, Dr. Garg, Vinay ji, for joining us for this forum. Our endeavors continue as far as the awareness building outreach in the water sector is concerned through various modes. Our social media handles, through our website, web portal, magazines, and much more. We keep talking about water and try bringing more and more stakeholders in this mission and try to contribute in making Jal Andolan a Jan Andolan. So with this, thank you so much everyone for your time. It's a pleasure and an honor to host you for one or the other program always. So do follow us, and for all the updates with regards to water, you can follow Water Digest on social media. Thank you so much. And if there is any query pertaining to the industries, and like I said, the notification or how can you conserve groundwater further, you can reach out to us and we'll try our best to connect you to the concerned people. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Vinay, for you, ma'am. supporting this Thank you, program. madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Vinay. Thank you. Thank you, Anupama.